Now after this, law of demand also says that demand of given commodity is affected by change in price of given commodity. Means movement along the demand curve and law of demand both are same. So we can say like this: law of demand exists in the movement along the demand curve. See, shift in demand curve and law of demand, shift in demand curve and law of demand both are opposite, because shift in demand curve says that demand of given commodity is affected by change in other factor due to change in any other factor, but law of demand says that demand of given commodity is affected by change in price of given commodity only. So law of demand does not exist in shift in demand curve. I hope all of you have understood the difference between movement along the demand curve and shift in demand curve. First of all, you will differentiate between both of these on the basis of meaning. Then after, effect on demand curve. Third, reason, and fourth, law of demand. I hope all of you have understood. Please pause the video and note down this. See, next concept, substitute goods. What is substitute goods? See, substitute goods are those goods. Substitute goods are those goods which can be used in place of one another, and provides same level of satisfaction to the consumer. For example, tea and coffee. Second, Coke and Pepsi. Suppose, see, now please take example of tea and coffee. Suppose tea and coffee. See, what is the definition of substitute? Substitute goods are those goods which can be used in place of one another, and provides the same level of satisfaction to the consumer. Suppose you want to consume tea. Or you can say, suppose you want to purchase tea from the market, but tea is not available in the market. Then you will purchase coffee. In the market, and coffee will provide same level of satisfaction like tea. So I can say like this: if tea is not available in the market, then you will purchase coffee, and coffee will provide same level of satisfaction like tea. Suppose coffee is not available. Suppose you want to purchase coffee in the market, but it is not available. Then you will purchase tea.
and tea will provide same level of satisfaction like coffee. So I hope all of you have understood what do you mean by substitute goods. Substitute goods are those goods which can be used in place of one another, and provide the same level of satisfaction. In place of one another means, suppose tea is not available in the market, then you will purchase coffee. If coffee is not available in the market, then you will purchase tea. Suppose you will purchase coffee, then coffee will provide same level of satisfaction like tea. And suppose if you will purchase tea, then tea will provide same level of satisfaction like coffee. So I hope all of you have understood what are the examples of substitute goods, means tea and coffee and Coke and Pepsi. Take an example of coffee and Pepsi. Sorry, Coke and Pepsi. Suppose Coke is not available in the market. Then you will purchase Pepsi. Pepsi means not available in the market. Then you will purchase Pepsi. And Pepsi will provide same level of satisfaction like Coke. I hope all of you have understood. Suppose Pepsi is not available. Then you will purchase Coke. And Coke will provide same level of satisfaction like Pepsi. So I hope all of you have understood what do you mean by substitute goods. And after this, see, take an example. See, tea and coffee, Coke and Pepsi. Now we are going to understand the concept of substitute by taking an example of tea and coffee. See, if an increase in price of substitute good. See, आप किसको सब्स्टिट्यूट गुड मानोगे और किसको गिवन गुड मानोगे? किसको सब्स्टिट्यूट मानोगे मींस टी को सब्स्टिट्यूट पुट करोगे या फिर कॉफी को सब्स्टिट्यूट लोगे? आपको कैसे पता लगेगा? तो बेटा जिस गुड के साथ आप प्राइस लोगे, जिस गुड के साथ आप क्या लोगे प्राइस, उस गुड को आप क्या मानोगे? सब्स्टिट्यूट। उस गुड को क्या मानोगे? सब्स्टिट्यूट। और जिस गुड के साथ आप डिमांड राइट करोगे मींस डिमांड पुट करोगे, ठीक है, मींस उसको आप क्या मानोगे? गिवन कमोडिटी। क्या मानोगे? गिवन कमोडिटी। तो ध्यान रहे बेटा कि जिस गुड के साथ आप प्राइस लेते हो, उसको आप क्या मान के चलोगे? रटना नहीं है बेटा, समझना है। आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सी सब्स्टिट्यूट गुड है और कौन सी गिवन गुड है? ठीक है, क्योंकि वहां पर जब हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो वहां बहुत डिफिकल्टी क्रिएट होती है। तो यहाँ पर समझो कि आप सब्स्टिट्यूट उस गुड को लोगे जिसके साथ आप प्राइस ले रहे हो। तो यहाँ पे मैं टी के साथ प्राइस ले रहा हूँ, तो टी मेरे लिए क्या होगी? सब्स्टिट्यूट गुड। और कॉफी के साथ मैं क्या ले रहा हूँ बेटा? डिमांड। तो डिमांड मींस मेरी किसकी हो गई? कॉफी मेरे लिए गिवन गुड हो गई। और आप हमेशा याद रखना जिस गुड के साथ आप डिमांड लेते हो वो गुड आपके लिए क्या हो जाती है? कॉफी हो जाती है। ठीक है, सपोज करो अगर मैं कॉफी के साथ प्राइस लेता, इसके साथ क्या लेता? प्राइस, तो कॉफी मेरे लिए क्या हो जाती? सब्स्टिट्यूट गुड। अगर मैं टी के साथ डिमांड लेता तो टी मेरे लिए क्या हो जाती? गिवन गुड। आई होप आपको समझ में आ गया, जिस गुड के साथ आप प्राइस लोगे वो सब्स्टिट्यूट गुड होगी और जिस गुड के साथ आप डिमांड लोगे वो आपके लिए कौन सी गुड होगी? गिवन कमोडिटी होगी, गिवन गुड होगी। सी इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। अब आपकी चॉइस है, आप किसका प्राइस रख सकते हो, टी का या कॉफी का। ठीक है, वो आपके लिए सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, बाकी जिसकी डिमांड लोगे वो आपके लिए क्या हो जाएगी? गिवन। सी इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड लाइक सी टी प्राइस an increase in price of substitute means tea price, means tea is substitute good, then it leads to
it leads to an increase in demand of given commodity। अभी मैंने आपको बताया था बेटा, गिवन कमोडिटी किसको लोगे, क्योंकि टी का तो आपने प्राइस ले लिया, तो ये कौन सी होगी, सब्स्टिट्यूट। तो गिवन में क्या लोगे आप, कॉफी, डिमांड ऑफ कॉफी, कॉफी डिमांड, इसके अंदर डिमांड ऑफ कॉफी, डिमांड ऑफ कॉफी। सी, ये मैंने ऐसे क्यों लिख दिया बेटा, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड देन इट लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ गिवन क्वांटिटी। सी, नाउ प्राइस ऑफ टी and demand of coffee, because we are taking here price of tea and demand of coffee, demand of coffee. Suppose price of tea increases, then price of tea increases means tea will become costly, and coffee will become cheaper, because price of tea increases, टी का प्राइस क्या करेगा, इंक्रीज, तो मार्केट में टी क्या हो जाएगी बेटा, एक्सपेंसिव, और कॉफी क्या हो जाएगी, चीपर। तो आप कॉफी को ज्यादा प्रीफर करोगे, तो कॉफी की डिमांड आप क्या कर दोगे, इंक्रीज, टी को नहीं परचेज करोगे, क्यों, क्योंकि टी एक्सपेंसिव है। सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड, मींस प्राइस ऑफ टी इंक्रीजेस, then tea will become costly and coffee will become cheaper, so you will purchase more units of coffee, suppose price of tea decreases, टी का प्राइस क्या कर गया बेटा, डिक्रीज कर गया, तो टी मार्केट में क्या हो जाएगी, चीपर हो जाएगी, मीन सस्ती हो जाएगी, और कॉफी मार्केट में क्या हो जाएगी, एक्सपेंसिव। तो आप टी को ज्यादा प्रीफर करोगे, तो कॉफी को क्या करोगे, कम। तो कहने का मतलब ये है कि अगर टी का प्राइस डिक्रीज करेगा, मींस प्राइस ऑफ टी डिक्रीजेस, टी विल बिकम cheaper and you will decrease the demand of coffee, so see here, there is positive relationship between price of tea means price of substitute good, I can say like this, price of tea or price of substitute good, demand of coffee means demand of given quantity, there is positive relationship. See, that's why if an increase in price of substitute good means tea price, then it leads to an increase in demand of given commodity means demand of coffee, and reverse this, see, and decrease in price of substitute good, decrease in price of substitute good, then demand of given commodity will decrease, demand of given commodity will also decrease in price of substitute good, then it leads to decrease in the demand of given commodity. So I hope all of you have understood. First of all, you will write definition of substitute good, then after you will explain the relationship between price of substitute good and demand of given commodity. It's up to you. You can take either price of tea, demand of coffee, or demand of tea or price of coffee. So I hope all of you have understood. After this you will show schedule. See, schedule. See, because we are taking here price of tea. So here tea price in rupees and coffee demand. Coffee demand means in units. See, suppose initial tea means initial price of tea is rupee 10.
initial price of tea is rupee 10. At 10 rupee initial quantity of coffee is 1 unit. मीन्स जब टी का प्राइस कितना था बेटा 10, तो आप कॉफी की डिमांड कितनी कर रहे हो 1 यूनिट, ठीक है। लेकिन टी का प्राइस 10 से कितना हो गया बेटा 20, 10 से कितना हो गया 20, तो आप अब 10 से 20 हो गया तो टी तो एक्सपेंसिव हो गई होगी, तो आप कॉफी को क्या करोगे इंक्रीज, मीन्स डिमांड ऑफ कॉफी विल इंक्रीज फ्रॉम 1 यूनिट टू 2 यूनिट। सपोज प्राइस increases from rupee 10 to rupee 20, then demand of coffee will increase from 1 unit to 2 units. I hope it is clear. It is clear. See after this. Now you will show diagram. You will show diagram. See, you will take tea price on y-axis, tea price on the y-axis, and coffee demand on the x-axis, coffee demand on the x-axis. See, हम यहाँ पर टी का प्राइस वाई एक्सिस पे क्यों ले रहे हैं बेटा, देखो क्योंकि जो कॉफी की डिमांड है वो टी के प्राइस के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। जो कॉफी की डिमांड है वो टी के प्राइस के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। मींस जो कॉफी की डिमांड है, जो कॉफी की डिमांड है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, टी के प्राइस के ऊपर। सो मींस कॉफी तो डिपेंडेंट हो गई और टी प्राइस क्या हो गया इंडिपेंडेंट, क्योंकि कॉफी की डिमांड को कौन अफेक्ट कर रहा है, टी प्राइस, जबकि टी प्राइस को कॉफी डिमांड अफेक्ट नहीं कर रही। तो ये तो हो गया बेटा डिपेंडेंट और ये क्या हो गई इंडिपेंडेंट। तो हमेशा याद रखना इकोनॉमिक्स में कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम कहाँ रखते हैं एक्स एक्सिस पे, एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम कहाँ मेजर करेंगे वाई एक्सिस पे। I hope all of you have understood why are we taking tea price on the y-axis and coffee demand on the x-axis, because tea price is an independent and coffee demand is a dependent. See, now tea price is rupee 10, tea price is rupee 10, and at 10 rupee unit of coffee 1 unit. Suppose price increases from 10 to 20, 10 to 20, 10 to 20, and coffee demand increases from 1 unit to 2 units. See, from 1 units to 2 units. So 1 unit to 2 units. See, add these corner. So you will get demand curve. Means this is upward demand curve. Upward demand curve. Upward demand curve. Why it is upward? Why it is upward? You can say why is it upward? Because there is positive relationship. There is positive relationship between price of substitute good and demand of given commodity. Because price of substitute good increases, demand of given commodity also increases. I hope all of you have understood concept of substitute good. Suppose question is there, explain the substitute good. Explain the substitute good with the help of schedule and diagram. With the help of schedule and diagram. First of all, you will write definition. Then after you will write example. Then after you will show explanation like this. Explanation like this. Then after you will show schedule. Then after you will show diagram. And your explanation will be completed. I hope all of you have understood substitute, meaning of substitute goods. Substitute goods are those goods which can be used in place of one another and provides the same level of satisfaction. I hope all of you have understood. Please pause the video and note down this.